Everyone, welcome to our online platform, the Dhronas. So, I'm here for your science and EVS topics. So, today I'm going to discuss about the photosynthesis and phytohormones. That means we are going to discuss about some topics from plants. Okay. So, in the plant's physiology, you need to read photosynthesis, then phytohormones means plant hormones, transportation of food and water, that means xylem phloem, guttation, the tropic movements of plants, then different types of plant parts, mostly the modified stem, modified root, modified leaves, this type of things. Okay. So among those topics, today we are going to discussing about the photosynthesis and phytohormones. Okay. So let's start the photosynthesis. Okay. So photosynthesis, as we all know that the photosynthesis is a very crucial part, and it is the thing that mostly the all the plants can do along with algae and some microorganism, not all, some microorganisms, suppose cyanobacteria, they can do the photosynthesis. Okay. So photosynthesis process is the process where they convert the light energy into chemical energy. Okay. Now using what? Using sunlight, water, and carbon dioxide. So these are the raw materials. Sunlight, water, and carbon dioxide are the raw materials of photosynthesis. And in the photosynthesis, which energy getting converted? Light energy is getting converted into chemical energy. Okay. Now in the photosynthesis, by using these raw materials, what is going to produce? Food, sugar, the glucose, and oxygen. So the most essential process in for the life on earth is photosynthesis, because it actually traps the energy from sunlight and convert it into food, and that energy is actually going in different, passing in the different food levels in the ecosystem. Okay. So it is the primary source of food, photosynthesis, and oxygen as well. It controls the carbon dioxide and oxygen cycle. Also, it is responsible for the water cycle as well. Now, photosynthesis कहाँ पे होता है? It takes place in the chloroplast. Chloroplast is a plastid. Okay. Plastid is a cell organelle. Different types of plastids are there: leucoplast, chromoplast. Chloroplast is the green plastid. Okay. Now it is also known as the kitchen of the plant cell. So chloroplast of plant cell, जिसमें आपका क्या है? Which pigment? Chlorophyll. That chlorophyll actually absorb or trap the sunlight energy and then process the photosynthesis. Now, in this photosynthesis, we have two phase: light dependent reaction, which is also known as light reaction, and light independent reaction, which is known as dark reaction. So this is light phase and this is dark phase. Okay. तो फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप है, एक में लाइट की जरूरत है, दूसरे स्टेज में लाइट की जरूरत नहीं है. The overall balanced chemical equation to represent the photosynthesis is 6CO2 12H2O, the sunlight, light energy. It will produce the glucose C6H12O6, उसके साथ oxygen and water molecule. Okay. Now the process. Process में आपका input क्या है? That means the raw material, what you need: sunlight, water and carbon dioxide. Output क्या है? What is the outputs? Glucose, sugar molecule and the oxygen. Now where this photosynthesis occur in the plants? Chloroplast, that means the plastid which contains the chlorophyll pigment.
This is found in the plant cell, mostly especially in the leaves. Sometimes it is also present in stems as well. Now the pigment which is responsible actually for the photosynthesis is chlorophyll, present in chloroplast. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है in the sac-like structure thylakoid. Now this chloroplast containing a structure thylakoid ऐसे disc-like आपके structure होते हैं. So these are thylakoid, इसमें chlorophyll रहता है, ठीक है. Now this green pigment absorbs the light energy. Okay. Now the stages of photosynthesis. Those stages. First one is light reaction. This light reaction is light dependent. इसमें light की जरूरत है. So light dependent reaction. This occurred in thylakoid membrane where the chlorophyll are present because the chlorophyll will trap the sunlight. Now इसमें सबसे important जो stage है वो है photolysis of water. The water that is absorbed by the plant root will go to the leaves and that water is used up in the photosynthesis process. Okay. So during the photosynthesis light phase, the photolysis of water occurs. Photolysis means breakdown of water by using light energy. ठीक है. Lysis का मतलब है कुछ भी चीज को break down करना. Photo means light. Okay. So breakdown of water by using light energy. So light energy is captured and used to split water molecules releasing the oxygen. Water molecules is the actually source of the oxygen which is released during the photosynthesis. This energy is getting converted into chemical energy in the form of ATP and NADPH. ATP is the major energy molecule along with another energy molecule is NADPH. Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Okay. So dark reaction is also known as Kelvin cycle. After the completion of the light dependent phase, जिसमें आपका सबसे crucial event है photolysis of water, जिसमें light water breakdown होके oxygen हो रहा है, ये होने के बाद आपके जो phase आता है that is dark reaction. This is light independent. इसमें light की जरूरत नहीं है, ठीक है. Light independent. Now, this light independent or dark reaction was traced by Melvin Calvin and Andrew Benson. ठीक है, Calvin and Benson traced this pathway कि how the dark reaction occurs inside the thylakoids and stroma. Carbon dioxide fixation. इसी में actually the carbon dioxide got fixed and carbohydrate molecule got synthesized. Carbohydrate molecule synthesize होता है, carbon dioxide fixed होता है. Now carbon fixation, the enzyme Rubisco captures carbon dioxide from the atmosphere. Okay. Carbon fixation means carbon fixation के लिए कौन सा enzyme responsible है? The enzyme name is Rubisco. Okay. This Rubisco is responsible for the carbon fixation. That means the carbon that is coming from the carbon dioxide. Okay. So this dark reaction occurs in where? Stroma, the fluid part inside the chloroplast. The fluid fills space within the chloroplast, that is stroma. ATP and NADPH from the light reactions are used to convert carbon dioxide into CO2. ये फर्स्ट स्टेप में आपके जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार हुआ था वही एनर्जी मॉलिक्यूल्स विल हेल्प टू परफॉर्म दिस डार्क रिएक्शन. नाउ बाय यूजिंग दिस एनर्जी मॉलिक्यूल डार्क रिएक्शन में आपके कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में. वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. ठीक है. और फोटो ऑक्सीजन तो आपके लाइट फेज में ही जनरेट हुआ था. दैट मीन्स लाइट फेज में आपके ऑक्सीजन आता है और डार्क फेज में आपके ग्लूकोज आते हैं. एंड द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन इज वाटर, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. डू रिमेंबर द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन इन द फोटोसिंथेसिस इज वाटर and the source of glucose is carbohydrate is carbon dioxide. Okay. And the energy in case of light dependent is the sunlight, that means the light energy. And in the second
Dark phase, the energy molecules are ATP and NADPH. Okay. Next is significance of photosynthesis. Now photosynthesis का significance क्या है? First of all तो पूरे अर्थ में जो लाइफ प्रोसेस है सबको जो फूड सप्लाई द एनर्जी सप्लाई करना है the most essential and crucial step is photosynthesis. It is the one of the most important biological process on earth for several reasons like base of the food chain. कोई भी फूड चेन ले लो पहले क्या आता है प्रोड्यूसर whatever your food chain considering first one is producer then in the producer after that then the herbivores that means they are directly depend on the plants after herbivores that is carnivores है ना that means meat eaters after carnivores they are omnivores that means we eat everything so producer means what producer means the green plant or tree प्रोड्यूसर मीन ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है हार्बीवोर हार्बीवोर से कार्निवोर्स कार्निवोर से ओमनीवोर्स so every food chain has the starting point is what producer so primary producer photosynthetic organisms from the foundation of the all food waves or food chain they convert the solar energy into usable food energy ये फूड एनर्जी सारे लेयर्स सारे स्टेजेस ऑफ फूड चेन्स में कंज्यूम हो रहा है ठीक है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन नाउ अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो बैलेंस होने चाहिए दैट इज एक्चुअली डन बाय व्हाट दैट इज एक्चुअली डन बाय दिस photosynthesis and oxygen is very essential for what aerobic respiration of the most of the life aerobic respiration means what aerobic respiration means ATP generation process मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन उसके लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो बैलेंस है साइकिल है वो किसमें रेगुलेट होता है दिस इज द फोटोसिंथेसिस इज द रेगुलेशन पॉइंट carbon cycle regulation correct the photosynthesis removes the vast amounts of carbon dioxide from the atmosphere fixes it into organic compounds so it actually balances the global carbon cycle कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या फिर कार्बन डिपोजिशन के लिए फॉरेस्ट दैट मीन्स ट्रीज आर द की एलिमेंट okay so this is brief about photosynthesis if you are getting a question like what is photosynthesis what are the phases of photosynthesis what are the raw materials of photosynthesis where the photosynthesis occurs and what is the source of oxygen in photosynthesis, in which phase the glucose is produced, what are the significance of photosynthesis. This type of question may comes in your upcoming like SI mains and SI mains, WBP SI mains and KP SI mains exams. So you can focus in this type of topics and make short notes from there. I've already listed the points and already I've represented the photosynthesis in a point manner only so that you can get the clear visual how you can modify your answer according to the question. Okay. So the next topic is phytohormones, plant hormones. Okay. So plant hormones are known as growth regulators. Phytohormone means plant hormone. These are actually plant growth regulators. प्लांट के कब न्यू लीव्स आने चाहिए कब लेंथ इंक्रीज होना चाहिए कब फ्लावरिंग होना चाहिए कब फ्रूटिंग होना चाहिए हाउ द सीड फॉर्मेशन should happen and when this type of every pattern is actually controlled by the plant hormones plant growth regulators PGR. Okay. Now this PGR can be broadly classified into two groups दो ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं कैसे नाउ एक ग्रुप है जो लोग ग्रोथ प्रमोट करते हैं एनी काइंड्स ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज जैसे कि सेल डिविजन सेल एनलार्जमेंट ट्रॉपिक ग्रोथ फ्लावरिंग फ्रूटिंग सीड फॉर्मेशन ये सारे ग्रोथ रिलेटेड है सो ग्रोथ प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स एक होंगे दूसरे क्या होंगे दूसरे होंगे जो कि ग्रोथ को
इनिबिट करते हैं, एजिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, फ्लावर्स और प्लांट लीव्स ड्रॉप्स को आप इन्फ्लुएंस करते हैं, वो अलग हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एब्सिसिक एसिड. So the major growth promoting hormones are auxin, gibberellins and cytokinins. These three hormones play major role in growth promotion in case of plants. So we are going to discuss about the major hormones of plants. First one is auxin. Auxin is primarily known as plant growth promoters. They are actually first class hormones which were discovered and they produce only the growing tips. Okay? Because these auxins are responsible for apical growth. The auxins are responsible for apical growth. So they actually present at the tips of the stem, tip of the root, young leaves, seeds इसमें रहता है जिसमें growth की जरूरत है. And it also helps in cell elongation, node elongation, so that the plants can grow in length. Okay. Next is gibberellins. Now these gibberellins are large group of hormones. They are also primarily growth promoters. They actually they actually responsible for the internode elongation. मतलब suppose आप जब कोई प्लांट के स्टेम देखते हो तो देखना वहां पे ऐसे ऐसे मार्क होते हैं, ठीक है, एंड दिस मार्किंग पॉइंट से ही ब्रांचेस वगैरह ज्यादा निकलते हैं, marking points. Now in between these two marking point, this is actually internode. Okay. So internode का लेंथ जितना ज्यादा होगा आपके प्लांट के हाइट भी उतने ही ज्यादा होंगे, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. तो जिब्बेरेलिन एक्चुअली फंक्शन ऑन दिस इंटरनोड एलोंगेशन. ओके. जनरली द ऑक्सिन्स आर प्रेजेंट इन द मतलब टिप पोर्शन में, ठीक है, एकदम प्लांट के टिप पोर्शन में, रूट्स जहाँ पे है, रूट्स के टिप पोर्शन में ऑक्सिन्स ज्यादा जमा होते हैं, या फिर यंग लीव्स जहाँ पे हो रहा है यहाँ पे आपके ऑक्सिन ज्यादा होंगे, ठीक है. तो टिप पोर्शन में आपके ऑक्सिन ज्यादा होता है. इंटरनोड पोर्शन एलोंगेशन के लिए जिब्बेरेलिन्स आर मोस्टली responsible. Next one is cytokinins. Cytokinins are group of hormones that promote cell division. Cytokinins are responsible for cell division. Now synthesized mainly in the root meristems. Root meristem मतलब जो आपके root के dividing portion है. हर root के आपके different parts होते हैं जो एकदम root के tip portion होते हैं. If it is a root, then the tip portion जो है यहाँ पे आपके एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर आपके मेरिस्टेम्स होते हैं, उसके ऊपर आपके परमानेंट सेल्स होते हैं, देन द रूट हेयर्स आर देयर, ठीक है. तो रूट के ऐसे कुछ कुछ पार्ट्स हैं. नाउ साइटोकाइनिन्स आर प्रेजेंट इन द रूट मेरिस्टेम्स फॉर सेल एलोंगेशन. रूट को और भी एलोंगेट करके नीचे जाने के लिए जो मतलब ग्रो करना चाहिए उसमें एक्चुअली साइटोकाइनिन हेल्प करते हैं. Now cytokinins also delay the senescence of leaves and flowers. आप अगर साइटोकाइनिन्स को लीव्स फ्लावर्स के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो द लीव्स एंड फ्लावर्स विल ड्राई लेटर, ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहता है साइटोकाइनिन्स देने से. सो इट एक्चुअली डिले द सेनेसेंस. सेनेसेंस मीन्स एजिंग. ओके. एंड ऑफन बाय प्रोमोटिंग द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. जितना न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के बॉडी में है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए साइटोकाइनिन्स प्रमोट करते हैं. सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली delay or inhibit the aging of the leaves. Okay. So auxin, gibberellin and cytokinins, these are mostly related to growth promoters. मतलब plants के overall growth के लिए these hormones are mostly responsible. Now the next group of hormone will be mostly associated with fruit formation, fruit ripening, and also they are responsible as a growth inhibitor. Growth inhibit कर देना इन लोगों का काम है, ठीक है. तो इथिलीन is the first hormone in this group. इथिलीन एक gaseous hormone है. Do remember इथिलीन is a gaseous plant hormone. इसका फॉर्मूला है C2H4. Commonly this ethylene is known as carbide which is responsible for fruit ripening. आप लोग सुने होंगे कि कार्बाइड गैस देके
फल को राइप किया जा रहा है, तो पके हुए फल जो मिलते हैं मार्केट्स में जल्दी जल्दी राइपनिंग होता है, तो दैट इज बाय अप्लाइंग दिस कार्बाइड और इथिलीन गैस, ठीक है। तो इथिलीन गैस के प्रेजेंस में बहुत जल्दी जल्दी फ्रूट राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं। नाउ इट प्रोडक्शन इज की मोस्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में प्रोडक्शन होता है, हाई कंसेंट्रेशन के वजह से एजिंग होता है और फ्रूट जल्दी जल्दी राइप हो जाते हैं। नाउ इट promotes the ripening of the many fruits such as banana, apples and tomatoes, stimulates the aging and abscission of, that means shedding of leaves and flowers. जो ये पत्ते झड़ते हैं मोस्टली द विंटर टाइम्स में, फूल पत्ते सब थोड़ा ड्राई हो जाता है, झड़ जाते हैं, प्लांट के ग्रोथ भी थोड़ा कम हो जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द वेदर एज वेल। फ्रूट राइपनिंग और शेडिंग ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स इज ऑल्सो ड्यू टू द इथिलीन, because these two hormones are growth inhibitor. These two hormones are growth inhibitor. ठीक है। Next one is abscisic acid, ABA. Abscisic acid is a plant growth inhibitor that is often referred to as the stress hormone. स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। नाउ दिस स्ट्रेस हार्मोन इंड्यूसेस एंड मेंटेन्स सीड डोरमेंसी, ensuring seeds do not germinate under unfavorable conditions. जो सीड्स को अगर आप सॉइल वाटर से दूर रखेंगे, ड्राई कंडीशंस में रखेंगे, तो यू कैन स्टोर द सीड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो आप सीड को स्टोर कर पा रहे हो अनफेवरेबल कंडीशन देके, सॉइल एंड वाटर रिमूव करके, हाँ एकदम ड्राई कंडीशन में, तो दिस प्रोसेस आपको सपोर्ट किस लिए हो रहा है? क्योंकि एब्सिसिक एसिड inhibits the germination of seed under unfavorable condition. Unfavorable condition मतलब soil, water, food etc. नहीं है, ड्राई कंडीशन में सीड आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। Now this abscisic acid maintains the seed dormancy. It helps to remain the seed in dormant state. Okay. So this abscisic acid and ethylene are known as growth inhibitor, but also this abscisic acid also plays significant role in fruit ripening. Along with ethylene. Okay. Plays significant role in fruit ripening along with ethylene. So ethylene and abscisic acid both are comes under group growth inhibitor hormone group. And the above three, auxin, cytokinin, gibberellins, they are growth promoters. Okay. These three are growth promoters. Okay. Sometimes these auxins are also known as apical dominant. Okay. So this is brief about phytohormones or plant hormones, which actually regulates the plant growth. Previously, I discussed the photosynthesis process. Okay. So I will discuss other topics in the upcoming sessions, upcoming classes. Our WBPSI mains, PSC clerkship main classes will be starting from 21st October. So you can connect with us for more details of the classes. I hope you enjoy the class and you will continue with us. Please do like, share and subscribe our channel. So that's it for today. Thank you all.